Thousands of farmers in Odisha's Jagatsinghpur district are in distress as the paddy procurement deadline approaches. With the deadline set to end on Tuesday, nearly 15,000 farmers are still uncertain about where they will sell their produce. The deadline has triggered widespread anxiety as many farmers fear their paddy may remain unsold. Reports suggest mismanagement at procurement centers or mandis has slowed down the process. The administration had set a target to procure 16 lakh quintals of paddy through 39 millers across 113 mandis. However, so far only around 15 lakh quintals have been collected. This leaves a significant amount of paddy yet to be procured with very little time remaining. With just one day left, it now seems unlikely that the entire stock will be lifted within the deadline. As concerns grow among farmers, the administration says efforts are underway to speed up procurement. But for thousands still waiting, uncertainty continues to loom large. आम कथा छाड़ू सरकार कहते समस्त चाषी धान किणा आम से ही कथा कहूँ आगे आपण कथार जगतसिंहपुर जिले में समस्त चाषी धान जाऊ 49,000 ऊर्ध्व चाषी जो मैंने पंजीकरण करते 3,662 चाषी जो मैंने पंजीकरण बाद पड़ते तेज ठीक अच्छे जो मैंने पंजीकरण कर 100% धान जदि जाता आज 18 लाख क्विंटाल आवश्यक पड़ता किंतु ए पर्यंत आमर जिला प्रशासन ये 16 लाख क्विंटाल धान भी किणवा को सक्षम हो पारा ना जहाँ बर्तमान डाटा कहूँ 89 ରୁ 90% पर्यंत धान किणा जाए बर्तमान 10% धान आहरी किणा जाए ना या जदि एमाने केवल फोकस कर धान उपर किंतु चाषी उपर फोकस कहीं कहीं 49,000 चाषी धान किणा जाई पारला ना एबे प्रति मंडी रे आमे हिसाब करूँ 30, 40, 50 जन चाषी प्रति मंडी 113टा मंडी जदि हिसाब करा जाए ताले जदि हिसाब करे पाखापाखि 10,000 चाषी जो मैंने धान किणवार वंचित अच्छे।